So firstly, a warm welcome to our channel Famezo, and thank you so much for giving us your time today for this interview. Thank you. Thank you so much for having me here. So in today's segment, we'll be going through how did you started with your acting journey, and then about your show. So to quickly Okay. begin this interview, first we would like to ask that tell us something that how this acting journey started. Was it your dream since childhood, or how it all happened? Okay, so I was 3 years old जब से मुझे acting ही करनी थी. It was like my passion. Anybody who used to come to my house and ask me that, what do you want to become when you grow up? So I was like, okay, I want to become an actress or a dancer. I just had this very fascinating imagination in my mind regarding TV industry, how it's so fascinating. I want to go there. So my parents started. उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे डांस अकेडमी भेजना शुरू किया. And from then through dancing only, I explored the artists inside me. मतलब मुझे ऐसा लगा कि now I can even act. क्योंकि because हम इतना डांस कर रहे तो there's a expression of speech involved in it. An expression of speech मेरे लिए क्या है? It's something to express. तो डांस के साथ साथ में एक्टिंग भी करना शुरू किया मैंने. And it all started from Shimla. And then I came to Bombay. I started auditioning for different roles. Of course, बहुत rejections भी मिले and बहुत सारे appreciations भी थी. फिर one day I went to the audition house and I auditioned for this चाहत का character. And yeah, it just happened. It just happened within a click. और फिर उसके बाद तो चीजें बस होती गई. And I was like, okay, wait, let me analyze हो क्या रहा है मेरे around. So yeah. Okay, so as you said, your parents supported you. They sent you to dance academy and all. So since you have been living in Shimla, so now अब आपको acting journey के लिए मुंबई आके रहना पड़ा. So कुछ difference लगा या how it was difficult or you were easily able to cope up staying this Mumbai life? No, of course, Shimla is very different from Bombay. The lifestyle of Shimla is completely different than we have in Bombay because Bombay is a very fast city. I mean, like everyone is in a hurry. They just want to go back to home and work, or they want to just go to work and then come back home. But Shimla is like a very slow city. It's like you can just see a slow motion and a fast motion. ऐसे साथ साथ चल रहा है. तो शिमला में ऐसा है कि लोग बहुत ही कितना देखो 9 बजे सारे मॉल्स खुलते हैं, शाम के 7 बजे बंद भी हो जाते हैं शिमला में. इतना स्लो स्टेडी लाइफ है वहां पे. बट बॉम्बे तो इज लाइक बॉम्बे तो नाइट लाइफ है. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी जब मैं इनिशियली आई थी क्योंकि पूरा एडजस्ट करना. बट लकीली मेरी बहन बॉम्बे में पहले से रह रही थी तो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ बॉम्बे में सर्वाइव करना बिकॉज मेरी बहन को काफी कुछ पता था कि कहाँ पे क्या है कैसे क्या है. तो इट वाज इजियर फॉर मी. बट यस जहाँ आपकी पेरेंट्स ना हो वहां पे डिफिकल्ट होता ही होता है. बट देन आई फील कि ये चीज हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाती है. घर वालों से थोड़ा दूर रहना गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. सो ठीक है. I think it's a phase of life. It's important to embrace it and enjoy it. आगे लाइफ में क्या होता है you never know. So just enjoy the moment. So now coming to your show Kurbanwa, so this is your first debut show, right? Yeah, this is my first show ever. Okay, so there has been such a great response on the show. Everybody is liking your character, the show. So if you would we would like to know that how much Pratibha is similar to Chahat. How much Pratibha is similar to Chahat? Well, now it's been like 1 year that I've been playing Chahat. Initially, when we are given a character brief, so we portray a particular character according to writers, as the writer wants us to make Chahat. But now slowly and steadily, because we ourselves only portray the character, तो 99% तो मैं प्रतिभा ही पोर्ट्रे करती हूँ. बस जो स्क्रिप्ट में लिख के आता है जैसा होता है. बट द वे आई एक्ट एंड द वे आई बिहेव, जो स्पॉन्टेनियस एक्शंस है मेरे, वो प्रतिभा के ही है. एंड देखा जाए सिमिलैरिटी बिटवीन प्रतिभा एंड चाहत ये है कि मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ बट इट्स जस्ट दैट आई फील दैट चाहत एंड प्रतिभा दे बोथ हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव. आई मीन लाइक मैं किसी के साथ बैठूंगी भी बात भी करूंगी तो आई विल मेक श्योर कि द पर्सन शुड फील वार्म.
वाइब होती है, आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वाइब अराउंड यू. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग जो शायद मैं चाहत से सीखूं, और या मैं बोल सकती हूँ कि चाहत और प्रतिभा में ये सिमिलैरिटी है. Okay. So we would like to know that did you find any scene very difficult or challenging for you in this show? Well, because it's been like for the first time I was acting in front of camera. Initially, things were difficult for me because I did not know how to face a camera. I did not know the technical things related to acting. Jo mujhe, my director has really helped me to just go through that, all that. But ऐसा difficult scenes आते हैं. Of course, काफी सारे difficult scenes होते हैं, but it's very, but it gets very easy when you get into that scene. मतलब मेरे लिए initially जब मैं आई थी तो एक powerful intense perform करना was difficult because मेरी आंखों में वो hold नहीं था. But then gradually, slowly and steadily, अब तो चाहत का इट्स ऑल इंटेंस. आई मीन यू सी द अभी जो रीसेंट एपिसोड्स भी आए हैं, अभी रीसेंट एपिसोड्स गए हैं, उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि यू हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड दैट वाज माय थोड़ा इंटेंस पार्ट. सो आई जस्ट लाइक इट कि जो चीज मुझे डिफिकल्ट लगती है, इट टर्न आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल फॉर मी बिकॉज मैं अपना इतना 100% डाल देती हूँ उस डिफिकल्ट चीज में. सो I think dealing with intensity has been difficult, was difficult. I won't say that it is difficult, but yeah, I think it's been a nice journey. I mean, like, जो difficult था उसको करने में मजा ही आया. तो as such कुछ very difficult वाला अभी तक नहीं आया है. Okay. So, like, as it's been almost like एक साल हो चुका है show को, you all have been working together. So we would like to know that any particular on-screen, मतलब like off-screen moment with the cast which is very memorable, और या कोई funny moment जो आपको ऐसे याद आता हो? Funny moment जो मुझे याद आता हो, I don't know, but the cast is very nice, very warm. हम जब साथ में होते हैं तो हम सब बहुत हंसते ही हैं. I mean, like, we just laugh. There's one boy Nishad, he's very funny. वो सबकी मिमिक्री करता रहता है. ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स, ऐसे ग्रैंड बड़े मोमेंट्स नहीं है, पर देन छोटे छोटे मोमेंट्स है जिनमें लाइफ कैप्चर्ड है, जिनमें वो ऐसे पल कैप्चर्ड है जो मैं शायद लफ्जों से बयान ना कर पाऊं, बट वेरी छोटे छोटे मोमेंट्स बट वेरी स्पेशल टू मी. So if you have to name like one person with whom you bond the most on the set, so who is that? Initially I used to bond a lot with Karan, but now as he's no more in the show, so now I bond a lot with Parak Madan. She's my stepmom. She's playing my stepmom. And Godamri ji, Neelam ji, she's like a mother to me. I mean, I can't say you, but she keeps me like her own daughter because उनके भी 2 बच्चे हैं जो मेरी एज के हैं, तो वो मुझे एकदम अपने बच्चे की तरह रखती है. मतलब कुछ भी खाने को लाएगी तो she'll make sure कि वो मेरे साथ शेयर करे. एंड आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें होती है जो तुम्हारे बीच की क्लोजनेस बढ़ाती है. तुम एक खाना शेयर कर रहे हो, इट्स बहुत छोटी सी चीज है, बट जो इम्पैक्ट होता है बहुत बड़ा होता है. आई मीन, यू नो, यू कीप इट क्लोज टू योर हार्ट. सो या, दे बोथ आर लाइक वेरी स्पेशल टू मी. Okay, so as you said that earlier Karan was there in the show, but now he has been replaced by Rajveer. So your co-actor is Rajveer now. So how's your experience and bonding been with Rajveer? Amazing. I mean, like, because I know how difficult it is to replace a character, and the way Rajveer has done it is phenomenal. And we both really gel a lot on set. हमारा बहुत ही मस्ती वाला जोन है. हम ज्यादा सीरियस बातें एक साथ करते नहीं है, हम सिर्फ मजाक उड़ाते रहते हैं एक दूसरे का. And I think that is the most beautiful part about each other. Okay, so like if any day you get a off from shooting, or if you have some free time while shooting on the set, so how do you like to spend your time? I just like to sleep. I can't tell you. I'm being very honest here. I love to sleep. I sleep a lot. If I have 10 minutes on shoot, you can see me sleeping here and there. There's one girl, Alicia. She's one of our cast. So she'll post my videos. If she sees me sleeping somewhere, so she'll make a video and she'll post that. See Pratibha is sleeping because I love to sleep. किसी से भी पूछ लो, प्रतिभा का फेवरेट पार्ट सब बोलेंगे सोना. एंड सोना तो है ही, बट देन उसके साथ आई मेक श्योर कि मैं थोड़ा वर्कआउट भी कर लूं बिकॉज इतना हैवी स्केड्यूल होता है तो बॉडी गेट स्टिफ.
हम इतना काम करते हैं तो आई जस्ट वांट दैट रिलैक्सेशन बिकॉज आई एम इनटू योगा आल्सो, योगा एंड डांसिंग. तो जस्ट गेटिंग बैक टू माय पुराना हॉबीज इज समथिंग व्हाट आई लाइक. एंड बाकी I sleep. I'm being honest. I'm being very honest in this interview. That's very honest reply that you had given, and it's true because you all have such a very hectic schedule, and you guys don't get to rest so much. So Yeah. it's necessary to sleep, get that sleep. Yeah, it's So very, very important. yeah. So second last question that I would like to ask, that if you would like to give any glimpse of the upcoming twist that is going to come in the show to the audience and viewers. Yup. Something very, very, very exciting is coming up in the show. And I'm sure and I hope that you guys will love it because even I am getting to play different sort of characters. I mean, like, एक character है, but then उसके कितने shades हैं. So getting to play different shades, and you guys will see a very different shade of चाहत now, and I hope you guys will love it. मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसको बखूबी निभा पाऊँ. And so yeah, stay tuned. Something very exciting is coming up. Okay, so lastly, to conclude this interview, we would like to ask that if you have any message to give to your fans. Yeah, I just feel कि जब मैं मुंबई आई ही थी, मैंने कभी इतना वार्म एक्सपेक्ट नहीं की थी अपने फैंस से. इतना वार्म रिस्पॉन्स मिला है ना मुझे कि मैं बहुत लकी फील करती हूँ that I have such nice fans with me जो हर छोटे छोटे चीज पे मुझे सपोर्ट करते हैं. हर छोटा सा छोटा कुछ भी मुझसे रिलेटेड बाहर जाता है ना, दे जस्ट स्टार्ट मेकिंग एडिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो बहुत ही अच्छा फील कराता है मुझे. मुझे समझता है कि जो मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, बिकॉज इवेंचुअली वी परफॉर्म फॉर ऑडियंस. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस इतना पसंद कर रही है तो और क्या चाहिए. वही इतनी सेटिस्फैक्शन दे देता है. जो तुम्हें ऑडियंस से प्यार मिलता है ना, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर एन आर्टिस्ट. उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. So thank you so much. जितने मेरे fans हैं, I really hold them very special, very close to me because बहुत ही overwhelming response रहा है, and thank you so much. Thank you so much for giving us your time and for interacting with us. And I'm sure कि Thank fans you. को कुछ interesting या कुछ नया ये segment के through पता चला होगा. So thank you Sure. so much once again, and all the best wishes to the whole team of Kurbanua. And we wish Thank that you. we can definitely connect sometime again more. Sure, sure, sure. Thank you. Thank you so much. Hi, I'm Pratibha, and you're watching me on Famazo. Please like, share, and comment.